अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शायद अब राहुल गांधी को मौका दिया जाएगा बोलने का पार्लियामेंट में। पहले यही खबर आ रही थी और वो सीधे तौर पे आरोप ये लगा रहे थे सरकार के खिलाफ कि जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उनको अपना पक्ष रखने नहीं दिया जाता। बताया जा रहा है कि शायद उन्हें आज बोलने दिया जाए ऐश्वर्या, बट उसके नीचे कंडीशंस अप्लाई हो सकता है कि सबसे पहले माफी मांगे राहुल गांधी, फिर वो अपनी बात रखे। देखिए, ट्विस्ट यही है, सरकार हमेशा चाहती थी कि राहुल गांधी आए, उनको वो आए, लेकिन वो पहले माफी मांगे देश से जो उनके रिमार्क्स थे। लेकिन अगर वो पहले माफी नहीं मांगते और उनको बोलने का मौका दिया जाता है तो शायद सरकार अलाउ नहीं करे। जब हमारी बात MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल से भी हुई थी, उन्होंने भी साफ कहा था कि सरकार चाहती है कि सदन चले। 36 बिल पेंडिंग है अभी भी और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है दोनों हाउस को चलने के लिए। 9 जो बिल हैं वो राज्यसभा में और बाकी के बिल लोकसभा में पेंडिंग है। और राहुल गांधी जब तक नहीं आते हैं, जब तक अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं देते हैं, तब तक उनको मौका नहीं, तब तक उनको वहां पर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर वो माफी मांगते हैं तो वाकई में राहुल गांधी, सरकार इस फैसले पर आई है कि राहुल गांधी आए, माफी मांगे और अपनी बात वो सदन के आगे रखें। तो एक बड़ी खबर भी सूत्रों से मिल रही है जो सरकार की तरफ से कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन पहले वो माफी मांगे और उसके बाद वो अपनी बात रखें। But that's the deal here, because the Congress party has been saying and coming out in defense of Rahul Gandhi that he has not said anything wrong or something which is false as far as his UK address is concerned. So maafi kis baat ki? Well, remember that particular letter by Rahul Gandhi, which he had sent to Lok Sabha Speaker Om Birla, in which he had categorically stated that because 4 to 5 of the cabinet ministers have alleged that he had said something wrong and that was against the country, that was insulting to the democracy and also to the parliament, and therefore the reason he should be given appropriate time to speak in the parliament. But on the other side, the BJP clearly had been saying that he can speak in the parliament, but first he should tender an unconditional apology because the remarks that he had made on the foreign soil is something that is insulting, that is demeaning to the country and to the parliament and to the chair of the house as well. And therefore the reason first the BJP wants that he assures the parliament that he will give an unconditional apology, and later the government is willing Rahul Gandhi to give time to the to speak. But on the other side, as Rahul Gandhi and different Congress senior leaders have mentioned that he had not said anything wrong, he will not apologize. So therefore the reason perhaps the logjam and the deadlock will continue between the opposition and the ruling party, and therefore the reason today via Gulletin process, via the voice vote, we will see certainly the government, which has the most important priority to pass finance bill and other industrial bills, that will be passed in the Lok Sabha, as the BJP already has issued whip to its member of parliament. Absolutely. So remains to be seen if today's proceedings will be allowed or not, or will Rahul Gandhi will also be given the way to put his side forward as far as he has been making those allegations that he has not been allowed to speak. But here the twist really comes across. Will he also give an unconditional apology as far as the BJP now demanding that on the floor of the House? We'll be back after a short break.